Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Balava Girivaradare Sudananda Vrajana Rajana Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Balava Girivaradari Yasora Nandana Vrajana Rajana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodananda Vrajana Rajana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Vrinda Jaya
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasade Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasade Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Radha Sundara ki Jai, Jagannath Baladeva Subhadra ki Jai, Shri Shri Gaura Nitai ki Jai, Shri La Prabhupada ki Jai, Tai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudidayat Sri Chaitanya Manovistam Sapitam Vinaupane Swayam Rupa Kadam Mayam Dadatyeva Panamtikam Bandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Tarubhya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, the Dynasty of Puru. We read today the text 22. We start by the word in Sanskrit, if you want to repeat it. Retahadaha. It's writing here. Utraha Nayati Naradeva Yamakshayat Vam Cha Asya Datha Garvasya Satyam Aha Sakuntala Retodaha Putra Nayati Naradeva Yamakshayat Panchasya Datta Garvasya Satyamaha Sakuntala Retodaha Putra Nayati Naradeva Yamakshayat Dvamchasya Datta Garvasya Satyamaha Sakuntala Retodaha Putra Nayati Naradeva Yamakshayat Dvamchasya Datta Garvasya Satyamaha Sakuntala. Retodaha Putra Nayati Naradeva
Mataji, you want to read? Taha, a person who discharges semen, putraha, the son, Nayati, say, Yamakshayat, from punishment by Yamaraj, or from the custody of Yamaraj. Tvam, your good self, Cha, and Asya, of the child, Dhata, the creator, Garvasya, of the embryo, Satyam, truthfully, Aha, say, Shakuntala, your wife, Shakuntala. So we read translation, a purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. O King Dusmanta, he who discharges semen is the actual father, and his son saved him from the custody of Yamaraj. You are the actual procreator of this child. Indeed, Shakuntala is speaking the truth. हे राजा दुश्मन, वीर स्थापित करने वाला ही असली पिता है और उसका पुत्र उसे यमराज के चुंगल से छुड़ाता है। आप इस बालक के असली सृष्टा जन्मदाता हैं। शकुंतला निसंदेह है, सत्य कह रही है। That means when the son become devotee, become purified, and go back to Godhead, he saved the father. इसका मतलब यह है कि जब पुत्र एक भक्त बन जाता है, शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम वापस लौटता है, तो वह इस तरीके से अपने पिता को बचाता है। In the purport, Srila Prabhupada writing, upon hearing the omen, Maharaj Dushmanta accepted his wife and child according to Vedic Smriti. Unnamo narakadyasmat pitaram trayate sudha tasmat putra iti proktaha svayameva svayambhuva. जिला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आकाशवाणी सुनकर महाराजा दुष्मंत ने अपनी पत्नी तथा पुत्र को स्वीकार कर लिया, जैसे कि वैदिक स्मृति के अनुसार। Because a son delivered his father from punishment in the hell called Put, the son is called Putra. तो अपने पिता को पुत्र नामक नरक के दंड से बचाने के कारण बेटा पुत्र कहलाता है। Yeah.
Put is the hell, and Putra is the son. तो पुत्रा जो पुत्र है वो एक नरक है और पुत्र For that is important. The children from the beginning must to be educated. For that Srila Prabhupada installed the Gurukulis everywhere. From children age, the children must to be educated like Vaishnava, not like karmi, materialist. बचपन से ही बच्चों को एक वैष्णव की बनने की शिक्षा देनी चाहिए, ना कि एक कर्मी और भौतिकवादी बनने की. And that help very much the progress of these children, because he start from the beginning. क्योंकि यह शुरुआत से ही बचपन में दिया जाता है, तो यह बच्चे की वृद्धि में बहुत ही विकास में बहुत ही सहायक होता है. Otherwise there is difficulty, because from children he go to the school and get Jana Sangha association, he become more and more contaminated. तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो फिर स्कूल जाता है और वहाँ पर अलग-अलग जनसंघ में जो लोगों का संघ मिलता है, तो उसके कारण वो है दूषित हो जाता है, उसकी मानसिकता दूषित हो जाती है. And after it's more difficult to understand the Vaishnava literature, to have realization is more difficult, because he can more and more contaminate. तो इस सोचने के कारण उसको यह जो वैष्णव की शिक्षाएं हैं, वैष्णविज्म की, तो वो उसको काफी कठिनाई होती है सब चीजों को समझने. And actually that is the problem of many young devotees, then come much contaminated from outside. देखते हैं कि जो युवा आते हैं वो अधिक अशुद्धियों के शिकार रहते हैं. Basically, everyone Vaishnava must to understand Sambandha, Abhideya and Prayojana. जो भी वैष्णव हैं उनको संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए. But in the school, in the Karmis school, nobody teach them about Sambandha, Abhideya, Prayojana. स्कूल में जो तीन हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, इस तरीके की शिक्षा नहीं दी जाती है. Sambandha means to discover the relationship with the Supreme Personality of God, Krishna. तो जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनसे अपना संबंध जानना ही संबंध ज्ञान कहलाता है. Abhideya is action. जो अभिधेय है वो एक कर्म करना है, कार्य करना है. Abhideya is action, perform devotional activities. तो भक्ति है वो डिवोशनल सर्विस कहलाती है. This is the process, Bhakti Yoga. यह एक विधि है भक्ति Yeah. की. And Prayojana is the aim. और जो प्रयोजन है वो एक लक्ष्य है. Go back to Godhead, develop Krishna Prema. भगवान भगवत प्रेम पाकर भगवत धाम वापस लौटना प्रयोजन कहलाता है. But in the materialist, he don't teach anything about Sambandha, Abhideya, Prayojana. ये जो भौतिक स्कूल सिस्टम है उसमें जो शिक्षक रहते हैं वो इस तरीके के कोई भी संबंध ज्ञान का हमें नहीं बताते. Yeah. So now the movement ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is practically new movement here in Srila Prabhupada founded the movement 50 years ago, near about 50 years. 50 years is not much. 50 years mean 3 generations, because many devotees come in ISKCON with age of 20 years. तो श्रीला प्रभुपाद ने 50 वर्ष पूर्व ही इस जो आंदोलन में इसकी शुरुआत की, जो ISKCON नामक संस्था की स्थापना की. तो केवल 50 वर्ष की मात्र बीते हैं, एक प्रकार से नया संस्थान है. और जो अधिकतर जो भक्त लोग जुड़े वो 20 वर्ष की युवा अवस्था में ही इससे जुड़े. And actually these devotees, some of them are grandfather. और जो इसमें से जो devotee 20 वर्ष की उम्र में जुड़े अभी वो दादाजी बन चुके हैं. So that means there was 3 generations. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 3 पीढ़ियां ही बीती हैं. 3 generations is the beginning. जो 3 पीढ़ियां हैं केवल एक शुरुआत है.
So in the future, when there is more and more and more generation, then the Vaishnava people, we get more and more realization. तो जिस तरह ये पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी तो जो वैष्णविज्म में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको और साक्षात्कार होगा And there will be less influence inside the movement, less karmic influence. तो इस तरीके से जो कर्मियों का जो प्रभाव है वह कम होता जाएगा But now it's little bit mixed with karmic society. तो अभी इसका एक मिश्रण मिलता है कर्मियों का और वैष्णव Yeah, because the influence of the materialist societies is very strong. क्योंकि जो ये भौतिकवादी हैं उनका जो प्रभाव है वो काफी ज़्यादा है And this is what we understand in the purport Srila Prabhupada explained. इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद में बता रहे हैं The children say the father, not the mother. तो इस तात्पर्य में बता रहे हैं पुत्र होता है अपने पिता को बचाता है माता को नहीं The mother be saved because she served the husband. और माता इसलिए बचती है क्योंकि वो अपने पति की या जो उसके पिता होते हैं उस पुत्र की उसको सेवा करती है Yeah. So must to be like that. The aim is to go back to Godhead, go back to Vaikuntha. तो यह हमारा लक्ष्य इस तरीके से होना चाहिए भगवत धाम वापस जाना वैकुंठ वापस जाना But the materialist society cannot understand that because then, on the last 300 years, then say women and men are equal right, then say. लेकिन भौतिकवादी हैं इन बातों को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि 300 सालों में हमें यह बताया गया कि जो स्त्री पुरुष हैं वह समान स्तर पर हैं And this influence people coming devotee, but then come with this contamination. We are same. जो भक्त लोग होते हैं वह इस तरीके की अपने मानसिक विचार लेकर आते हैं Yeah. And get difficult to understand, even devotees. But here is very clear, in the Bhagavatam explain everything very clear. कभी-कभी भक्त लोगों को भी इसको समझने में अत्यंत कठिनाई होती है लेकिन भागवत में इसको स्पष्टता बताया गया है We are not the same. हम बराबर नहीं हैं The Dharma of the Mataji is submission and chastity. तो जो माता जी का धर्म होता है वह समर्पण और स्थित्व बनाए रखना है The men follow Shruti Smriti. जो एक आदमी होता है वह श्रुति और स्मृति को पालन करता है And the wife follow the husband. और जो पत्नी होती है वह अपने पति का अनुसरण करती है That is perfect. यह अपने आप में पूर्ण है But actually, by contamination of materialist society, even devotees sometimes have difficulty to understand that. कभी-कभी जो भौतिकवाद की जो विचार हैं इसके शुद्धि के कारण भक्तों को इसको समझने में अत्यंत कठिनाई होती है So if we don't understand, we cannot go back to Vaikuntha. तो हम अगर उसको नहीं समझते तो हम वैकुंठ वापस नहीं जा सकते Because a son delivered his father from punishment in the hell called Put. The son is called Putra. According to this principle, when there is a disagreement between the father and mother, it is the father, not the mother, who is delivered by the son. तो अपने पिता को पुत्र नामक नरक के दंड से बचाने के कारण बेटा पुत्र कहलाता है इस सिद्धांत के अनुसार जब भी पिता तथा माता में कोई विरोध होता है तो पुत्र द्वारा माता का नहीं अपितु पिता का उद्धार होता है For that, in the Vaishnava culture, this Vaishnava culture, there is not divorce. There is not. तो जो हमारा वैष्णव संस्कृति है उसमें कभी भी तलाक नामक या विवाह विच्छेद नामक चीज नहीं होती है In Kali Yuga, everybody have difficulty, also Grihastra and also Brahmachari and everyone. इस
कलयुग में जो ब्रह्मचारी में रहते हैं यह समस्या अत्यंत प्रबल हो चुकी है। But we must to understand the aim is to go back to Vaikuntha, not to be comfortable. तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य वैकुंठ वापस जाना है, ना कि यहाँ पर आराम से जीना। If the Mataji is not satisfied with the husband, or the husband is not satisfied with the wife, then must to tolerate. यदि जो पत्नी है वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है या पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, तो Divorce is no solution. Divorce is not solution. तो हमें समझना होगा कि आपस में दोनों को एक दूसरे का सहन करना चाहिए और विवाह विच्छेद कोई समाधान नहीं है। Even the couple who have difficulty, if they are learned Vaishnava, then understand this difficulty is to purify himself. तो हमें कठिनाई भी आती है ये विवाह विच्छेद जैसी, लेकिन हमें समझना होगा कि हमें शुद्ध करने के लिए प्रयोजन है। And not to see that like big problem. Okay, there is big problem, so we separate. It's not like that. तो हमें इसको ऐसे बड़ी समस्या नहीं समझना है कि हम बस अलग हो जाएं। He must to understand this difficulty is the mercy of Krishna. By overcome, by tolerate this difficulty, one develop the quality necessary to go back to Vaikuntha. So it's the mercy of Krishna. It's no problem. It's the mercy of Krishna. तो हमें समझना है ये भगवान कृष्ण की कृपा है इस तरह की घटनाएं। तो हमें अब इन्हें सहन करना है, एक दूसरे के साथ बना रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। On the Western, there is one man marries 2, 3, 4 times. Marries and separate, marry and separate. Because they want to enjoy. क्योंकि पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं जो आदमी होता है वो 4-5 स्त्रियों के साथ विवाह करता है, क्योंकि वह आनंद प्राप्त करना चाहता है। My wife is no good, so I will take another one. मेरी पत्नी अच्छी नहीं है तो मैं कोई दूसरी को ढूंढूंगा। But then the aim of them is not to go back to Vaikuntha, because then think we die and everything is finished. क्योंकि वो उनकी है विचार है कि हम मर जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमें उनको नहीं पता कि हमें वैकुंठ जाना हमारा उद्देश्य है। So the culture, Vaishnava culture and materialist culture is completely opposite. तो हम देखते हैं जो ये भौतिकवाद का जो संस्कृति है और वैष्णव जो सिद्धांत है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है दिखते हैं। So it's the father and not the mother who is delivered by the son. हम देख सकते हैं कि माता का नहीं अपितु पिता के द्वारा पुत्र उद्धार करता है। But if the wife is faithful and firmly adherent to her husband, when the father is delivered, the mother is also delivered. हम देख सकते हैं कि तो यदि पत्नी अपने पति की आज्ञाकारिणी हो तो पिता का उद्धार हो जाने पर माता का भी उद्धार हो जाता है। That is perfect. यह बिल्कुल अपने आप में पूर्ण है। It's perfect. Bhakti Yoga come together with one philosophical philosophical structure. तो हम समझ सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है जो हमारा फिलॉसफी का सिद्धांत है, इसको समझने पर हमारे जीवन पूर्ण होता है। And this philosophical structure explain everything. तो ये दार्शनिक ढांचा है, यह हमें सब कुछ बताता है। So by this way we can get jnana and vijnana. तो हम इस ढांचे को समझने से हमें ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान आता है। When the devotee have vijnana, realization, he become protected. Also, if it's women or men, it's the same. When they get realization, then become protected. तो जब इस ज्ञान का उनको समझ आती है, साक्षात्कार होता है विज्ञान का, तो वह इनको बचाता है। Hridaya Granti Vedam. Hridaya Granti Vedam means protected by his realization.
वेदम, इसका मतलब यह है कि हमें इस जो आत्म साक्षात्कार है हमें बचाता है। For that is important to have jnana and vijnana. इसलिए आवश्यक है हमें इस ज्ञान और विज्ञान की समझ होनी चाहिए। Consequently, there is no such thing as divorce in the Vedic literature. अतः हम समझ सकते हैं कि वैदिक साहित्य में विवाह विच्छेद का नाम निशान नहीं है। Yeah. Have to tolerate the situation. If there is difficult, they have to tolerate. Everyone have to tolerate. Also brahmachari sometimes have difficulty, have to tolerate. तो अगर किसी को कठिनाई होती तो हमें सहन करना पड़ेगा, यदि ब्रह्मचारी भी है तो भी सहन ही करना पड़ेगा। Yeah. The aim is no sense gratification. तो इंद्रिय भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। This is the point. A wife is always trained to be chaste and faithful to her husband. For this help her achieve deliverance from any abominable material condition. तो पत्नी को सती तथा पति की आज्ञाकारिणी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी अत्यंत बुरा अवस्था में उसका उद्धार हो जाता है। This verse clearly say, Putro nayati naradeva yamakshayat. The son saved his father from the custody of Yamaraj. यह श्लोक स्पष्ट कहता है, पुत्रो नयति नरदेव यमक्षया, पुत्र अपने पिता को यमराज के चंगुल से बचाता है। He never say Putro nayati mataram. The son saved his mother. इसमें यह नहीं कहा गया कि पुत्रो नयति मातरम, पुत्र अपनी माता को बचाता है। The seed giving father is deliberate, no the storekeeper mother. तो जो बीज प्रदाता पिता का ही उद्धार होता है, संग्राहक माता का नहीं। So the mother is the storekeeper of the children. तो जो माता है वो एक संग्राहक है। We can say also custody, no? In English we say custody. Custody. The mother is the custody, is the guardian of the children. तो माता एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। Yeah. Consequently, husband and wife should not separate under any condition. For if they have a child whom they rise to be a Vaishnava, he can save both the father and mother from the custody say in English? Custody or custody? From the custody of Yamaraj and punishment in hell's life. अतः पति और पत्नी को किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे संतान हो जिसे वे वैष्णव बना सकें, तो माता पिता दोनों को यमराज के चंगुल से छुड़ा सकता है और नारकीय जीवन के दंड से उबार सकता है। That is we must understand on the International Society for Krishna Consciousness is 95% society of Grihastra. हमें समझना होगा जो ये कृष्ण भावनात्मक आंदोलन है, ये 95% गृहस्थों से मिलकर बना है। The most of devotees and female or men are Grihastra. तो हम इस आंदोलन में देखते हैं जो स्त्री पुरुष हैं वो अधिकतर गृहस्थ हैं। It's very few brahmachari and sannyas. जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं उनकी संख्या If you see how many devotees is in one congregation, in one yatra, I don't know how many devotees in this congregation here, near about. Nobody know. 500. In 500,
95% are grihastras. देख सकते हैं जो यहाँ कॉन्ग्रेगेशन है उसमें करीब 95% 500 जैसे हैं तो उसमें करीब 95% गृहस्थ होंगे. So for that it's very important to understand the position of men and women. तो यह बहुत ही आवश्यक है कि स्त्री पुरुष की हम स्थिति जानें, उनको किस तरह कार्य करना है. We are not the same. हम बराबर नहीं हैं. Yeah. The materialist society say we are the same, but this is completely wrong. तो ये भौतिक जो है वो जो एक संस्कृति है वो बताती है दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. The most of members of the materialist society born again. तो ये जो भौतिक जीवन में जो लोग रह रहे हैं वो फिर से उनका पुनर्जन्म होगा. And the most of them more again without human form. और उनको फिर से मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला है. So this is a big problem. अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है. Bhaktivedanta Saraswati Maharaj, he say, in the material world there is so many problems, but the really problem is when one lost the human form. He born with animal form or vegetal form. This is the really problem. When someone lost the human form. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या समझते हैं. This is the really problem because 8,400,000 different kind of form of life. तो जो 84 लाख योनियों में मनुष्य जो जानवर की योनियों में पहुंच जाता है यह वास्तव में एक समस्या है. On the deep of the ocean, for example, on the deep of the ocean is millions different kind of aquatic living entity. जैसे समुद्री गहराई में देखते हैं तो कई प्रकार के लाखों तरीके के समुद्री जीव मिलते हैं. And they cannot perform bhakti yoga. वो लोग भक्ति योग नहीं कर सकते हैं. They have to born again until the moment when they reach again one human form. तो उनको पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा, जन्म लेता रहना पड़ेगा जब तक उनको मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर पूरा नहीं मिलता. And when in this moment, and then can do devotional activities. इस मनुष्य शरीर में भक्ति योग का पालन कर सकते हैं. For that, the first aphorism of the Brahma Sutra says, Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Now is the moment to perform devotional activities. Now. तो अततो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे बताया गया है कि मनुष्य शरीर में ही हम अपने भक्ति जीवन की सेवा की शुरुआत कर सकते हैं. So the more intelligent devotees then catch it. हमको सेवा का जो अवसर मिलता है कभी नहीं छोड़ना चाहिए. Yeah. Some devotees live in some places far away and then come for Janmastami, come in the temple and do some service. तो कुछ लोग हैं जो कभी दूर भी रहते हैं लेकिन जैसे जन्माष्टमी के दिन आके कुछ सेवा करते हैं. And another come every Sunday. कभी कुछ लोग संडे आते हैं. And another come every day. कुछ लोग प्रतिदिन आते हैं. So Krishna give for everyone opportunities to increasing devotional activities. भगवान कृष्ण सबकी सहायता करते हैं कि वह इस भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएं. According what he deserved. जैसे भी उसकी क्षमता है तो उसके लायक है. Who control of that? The Paramatma. परमात्मा सब कुछ नियंत्रण करते हैं. And he never mistake because he know everything about everyone. वह सबके बारे में सब कुछ जानते हैं इसलिए वो कभी त्रुटि नहीं करते. So he give more opportunity or less opportunity according to what the person deserves. जो भी व्यक्ति की जो उसके लायक है उसके अनुसार ही भगवान उसकी सहायता करते हैं. For that is important to catch every opportunity. We have to do any small service. We have to catch this opportunity. तो हमें कभी भी अवसर खोना नहीं चाहिए. छोटी से छोटी सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए. One time we was
outside in the garden of the temple, one group of devotees speak about anything. एक बार बाहर मंदिर के उद्यान के बाहर कुछ भक्त बात आपस में वार्तालाप कर रहे थे। In this moment start the Sundararti. उस समय श्रृंगार आरती शुरू हो जाती है। But the devotees continue to speak. तो वह अपना वार्तालाप जारी रखते हैं। In this moment coming one sannyas to the Sundararti, and he saw the group there speak about anything. वहाँ से सन्यासी आके वह देखते हैं भक्त वार्तालाप कर रहे हैं और श्रृंगार आरती शुरू हो चुकी है। So he say, hey, the Sundararti start, chalo, let's go, chalo. तो सन्यासी ने उन भक्तों से कहा कि श्रृंगार आरती शुरू हो चुकी है, आप चलिए। So all the group will go to the Sundararti. भक्त लोग थे वो श्रृंगार आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। And after the Sundararti, they go out. फिर श्रृंगार आरती में फिर बाहर जाते हैं। And the sannyasi say, we put one more Sundararti in the spiritual bank. आपने अपने जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है उसमें आपने एक श्रृंगार आरती को अकाउंट में जोड़ लिया। And this is the right to understand. We have to put any small spiritual activity we put in the spiritual bank. यही असली समझ है क्योंकि There we have account. By the mercy of Prabhupada, we have account. तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हमारा जो ये आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है ये खुला है और हमें छोटी से छोटी सेवा से इसको हमेशा जोड़ते रहना है। And we never lose anything from the spiritual bank. तो इस बैंक अकाउंट में हम कुछ भी कभी भी खोते नहीं हैं। In the bank, the materialist people have bank account everywhere, but many times they lose. तो भौतिक लोग जीवन में कई प्रकार के बैंक अकाउंट रखते हैं और कभी-कभी उसमें रखी जमा राशि भी खो देते हैं। In the spiritual bank, all our activity is there eternally, never lost. तो हमारी आध्यात्मिक Eternally. बैंक अकाउंट में यह जो भी हम सेवा करते हैं हमेशा के लिए रहती है, कभी भी हम खोते नहीं हैं। Yeah. So that slok explain the situation of the son, the father, and the mother. तो यह जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि पुत्र की क्या स्थिति है, पिता एवं माता की स्थिति। He become devotee, he saved the father, अगर वह वैष्णव बनता है, भक्त बनता है तो अपने पिता को बचाता है, not the mother. माता को नहीं। But because the mother served the husband, she can go back to the spiritual world. क्योंकि माता पिता पति की अपने पुत्र के पिता की सेवा करती है इसलिए वह भगवत धाम वापस जाती है। In this canto, 9 canto, 9:655, there is another slok we speak about this situation. The wife served the husband, and when the husband go back, she also go back. उस स्कंद में अध्याय 9.6.55 में सेम स्थिति को वर्णन किया गया है कि अगर पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो वह भगवत धाम वापस जाती है। It's 9. We read few days before, I think this 9:655. 9:655. Tasva Patryu Maharaj Nirikshayatmikim gatim Aviyutata pravena Agni Shattam Ivarsitha. In the purport, the slok say, "Oh Maharaj Parikshit, by observing the husband progressing in spiritual existence, Subari Muni wife were also able to enter the spiritual world by his spiritual power, just is extinguished." जिस तात्पर्य में बताया गया है कि हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर शौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई,
जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। And the purport Srila Prabhupada say, I started in Bhagavad Gita 9.32, Striyo Vaishyas Tata Shudro Te Piyanti Paramgatim. तात्पर्य में बताया गया कि जैसे कि भगवत गीता के अध्याय 9:32 श्लोक में कहा गया है, स्त्रियों वैश्यस्तथा शूद्रोस्पति यान्ति पराम गतिम। Women are not considered very powerful in following spiritual principle, but if a woman is fortunate enough to get a suitable husband who is spiritually advanced, and if she always engaged in his service, she also get the same benefit as her husband. तो आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु यदि कोई इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिले जो आध्यात्म विद्या में बड़ा चढ़ा हो, और यदि वह उसकी सेवा करती हो तो उसे भी पति के समान लाभ मिलता है। Yeah, in the book of Srila Prabhupada, many times we found Srila Prabhupada speak about inferiority of women. तो हम तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद के द्वारा पाते हैं कि जो स्त्री की निम्न स्थिति उसके बारे में बताते हैं। But he say that is not criticize. We don't criticize the women. We make analysis of the situation. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्थिति का ही विश्लेषण करने पर करते हैं, लेकिन इसका हमारा उद्देश्य उनको निंदा करना नहीं है, क्रिटिसाइज करना नहीं है। Because in the first canto and the 3 canto, 5 canto, first canto, 3, 5. No, excuse me. First canto, 3 and 4, 6 and 7, and 9. And all these 6 cantos of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada speak about women is inferior to men. Also here we read now. But that is not criticized. That is not to criticize the woman. That is to help the Mataji, to help. She must understand what is her position. Otherwise, cannot go back to the spiritual world. He explained very clear. Here, it is clearly said that the wife of Subari Muni also entered the spiritual world by the influence of the husband. यहाँ यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शौभरी मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर पाईं। They were unfit, but because they were faithful followers of the husband, they also entered the spiritual world with him. शौभरी की पत्नियां अयोग्य थीं, किंतु अपने पति की आज्ञाकारिणी होने से वे उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुईं। Thus, a woman should be faithful servant of the husband, and if the husband is spiritually advanced, the women will automatically get the opportunity to enter the spiritual world. स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होना चाहिए, और यदि पति आध्यात्मवादी है तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर स्वयं ही देव मिल जाएगा। Yeah, that is the argument is similar with the slok we read today. तो ये जो संवाद पढ़ रहे हैं, जो आज हमने श्लोक पढ़ा, उसी से ही संबंधित है, उसी के जैसा ही है। Life is a science. जीवन एक विज्ञान है।
And every Vaishnava people, women or men, must to know this science. तो जो भी वैष्णव में स्त्री है तो वैसे ही आगे ज्ञान को जानना ही पड़ेगा। Is the more rich thing we have in Krishna consciousness is the philosophy. कृष्ण भावनामृत में यह एक विज्ञान है, दार्शनिक विज्ञान है। That is the structure philosophic I spoke before. Structure which philosophic structure. Philosophic structure. दर्शन का एक ढांचा है, वह हमें समझ विज्ञान को समझने में सहायता करता है। It's very, very rich. The philosophy, Vaishnava philosophy, is very, very rich. यह जो वैष्णव दर्शन है, ये बहुत ही इसमें गहराई है। So everyone must to know and to follow. सबको यह जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। That is Krishna consciousness. I accept instruction and I follow the instruction. That is Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में आदेशों का पालन करना ही लक्ष्य है। Also in the ninth canto, chapter 9, slok 32. स्कंद 9 के अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 9:32. 32वां। There say the Mataji without husband is a dead body. Dead body. Dead body. Margeya is not alive, is dead. तो इसमें बताया गया कि किस तरह जो उसके पति रहता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। In the materialistic society, then say, I am free. But nobody is free. Freedom mean when you are free from born, disease, old age, and death. There is you are free. तो वास्तविक स्वतंत्रता जन्म मृत्यु जरा व्याधि से स्वतंत्र होना ही स्वतंत्रता कहलाता है। That is illusory. When someone say I am free, that is illusion. तो ये काफी भ्रामक है जो ये कहता है मैं स्वतंत्र हो गया। Yeah. The Manusmriti say the women is never independent. मनुस्मृति में बताया गया है कि जो माता जी होती है, पत्नी होती है, वो कभी स्वतंत्र नहीं रहती। When she is children, when she is little girl, is protected by the father. जब वो छोटी रहती है तो वो अपने पिता के द्वारा संरक्षित रहती है। When she become married, she is protected by the husband. जब विवाह हो जाता है तो वह पति के द्वारा पति के संरक्षण में रहती है। And when she become very old, she is protected by the son or the family members. So she never is independent. तो जब वह बूढ़ी हो जाती है तो जो वयस्क हैं, जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनके संरक्षण में रहती हैं। इस तरह वो कभी स्वतंत्र नहीं रहती। In reality, nobody is independent in the material world. वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। One become independent when depends completely of the absolute. In this moment is independent. 9:32. When is this? 9:32. Yeah. There is
Translation 9932. Without my husband, I cannot live for a moment. If you want to eat my husband, it will be better to eat me first. For without my husband, I am as good as a dead body. तो इस श्लोक के अनुवाद में बताया गया है कि मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। So in the purport, Srila Prabhupada say, in the Vedic culture there is a system known as sati or some. No, we will read only the last part because the way we have no time. According in the last 5 line, according with Manu Samhita, she is never independent. Independence for a woman means miserable life. तो मनु संहिता के अनुसार स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। In this age, so many girls are unmarried and falsely imagine themselves free, but their life is miserable. इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और वे झूठे ही अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन कष्टमय है। Here is an instance in which a woman feels that without her husband, she was nothing but a dead body. यहाँ एक दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अपने पति के बिना एक शव के तुल्य है। Yeah. And also in the first canto, chapter 9, text 48. One, 9, 48. 1, 9, One, 9, 48. Thereafter, Maharaj Yudhishthir at once went to his capital, Hastinapur, accompanied by Lord Sri Krishna, and there he consoled his uncle and owned Gandhari, who was an ascetic. Gandhari is one very good example of the position of the Matajis. हस्तिनापुर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ और वहाँ जो गांधारी हैं उनको सांत्वना देते हैं जो कि एक योगी की तरह के जो गांधारी वो हमें माता जी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा उदाहरण है। And the second part of the purport, there we read, Gandhari was a powerful ascetic. Although she was living the life of a faithful wife and a kind mother, जो गांधारी है वो एक काफी योगी की तरह जीवन जी रही थी और वो काफी समर्पित पत्नी तथा एक बहुत ही अच्छी माँ थी। it is said that Gandhari also voluntarily blindfolded her eyes because of the blindness of the husband. Yeah. क्योंकि जो उनके पति थे वो अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपना स्वेच्छा से अपनी आंखों को पट्टी से बांध दिया। So Prabhupada writing, a wife's duty is to follow the husband 100%. श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पत्नी की जो कर्तव्य है वह अपने पति का 100% उनका आदेशों का पालन करना है। And Gandhari was so true that her husband that she followed in even in his perpetual blindness. जो गांधारी थी वह इतनी ज़्यादा समर्पित थी कि उनकी जो हमेशा के लिए उनके अंधापन भी था तो भी उनका हमेशा साथ दिया। The husband was, she also put one, how do you say,
blind his eyes because she wants not to be physically superior as the husband. गांधारी जी उन्हें पता था कि हम शारीरिक स्तर पर जो स्त्रियां होती हैं वह एक पुरुष शरीर से भिन्न होती हैं. That is the example how she understand the Vaishnava philosophy. तो यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि गांधारी माता किस तरह समझ सकती हैं, मतलब वैष्णव सिद्धांत को समझती हैं. In the 7th canto, 12th chapter, 9 text, there we read, if one cannot understand the basic principle of restraining association between men and women, he is to be considered an animal. स्कंद 9 12 7, 12, 9. स्कंद 7 के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है कि अगर पति का अनुसरण नहीं करती है, पालन नहीं करती, तो उसको एक जानवर के भांति समझना चाहिए. If one cannot understand the basic principle of restraining association between men and women, he is to be considered an animal. That means if you cannot understand women and men are different, you are an animal. तो अगर आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जो स्त्री पुरुष हैं, उनके जो शरीर को अलग-अलग हैं, तो आप एक जानवर के स्तर पर हैं. And that is actually the materialist society is society of animals. भौतिक समाज है, यह वास्तविकता में उसकी स्थिति को इंगित करता है, जो कि जानवर के स्तर पर जीवन करते हैं. Eating and sleeping and enjoying. तो हमेशा वो भ्रम में रहते हैं. Then think eating and sleeping, enjoying life, because after we die. That is the same thing do the animals. The animals do the same thing. जो जानवर जैसे सोता है, खाता है और अपना आराम से जीवन जीता है. Eating and sleeping, meeting and defend himself. खाना पीना, बच्चे पैदा करना, स्वयं की रक्षा करना, इसी के स्तर पर ही जीवन यापन करते हैं. It's completely animal. तो यह बिल्कुल जानवर का स्तर है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Srila Prabhupada won is a perfect Vaishnava society. And that will be, but needs some time. श्रील प्रभुपाद ने यह आंदोलन शुरू किया एक परफेक्ट वैष्णव समाज बनाने के लिए, और धीरे-धीरे हम समय के अनुसार बढ़ते जाएंगे. Yeah. Some questions? सीधे कोई प्रश्न? Comment of questions? You are new student. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे. Thank you for your attention.